So hello everyone, let's continue with the next thing, that is a subnet mask for S1. What will be the subnet mask for S1? Subnet mask for S1. Yes, tell me. 255.255.255.0. Oh, this is not the right answer. Let's see. What will be the default mask for this one? Default mask for this one is 255.255.255.0 because it is of class C. So here 0 means 1 2 3 4 1 2 3 4, right? So whenever we are doing subnetting, what we'll do, we'll convert some of the 0 from the host portion to 1, right? तो यहाँ पे कितनी जीरोस को 1 में कन्वर्ट किया, एक एक बिट यूज की थी ना हमने, तो एक बिट को हमने 0 से क्या कर दिया, 1 बना दिया। तो यहाँ पे क्या कर दिया, 0 से इसको 1 बना दिया, राइट? तो जैसे ही 0 से 1 बनाया, तो यहाँ पे अब सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसका, राइट? सो नाउ द सबनेट मास्क इज 255.255.255.1000. It is 4 time 5 6 7 8, 8 times 0. Now this is the subnet mask for S1, right? Because we have reserved one bit, है ना, एंड यहाँ पे हमने एक बिट को रिजर्व किया था ना, इट मीन्स एक बिट को रिजर्व कर दिया, तो यहाँ पे एक बिट को मास्क में 0 से 1 में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब नेटवर्क पोर्शन अब बढ़ गया, और जो होस्ट पोर्शन होता है उसमें नंबर ऑफ वंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मास्क सबनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका सबनेट मास्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 255.255.255.128. This is what the subnet mask for S1. So 255.255.255.128, या ऐसे 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 भी सोच सकते हैं कि एक बिट को रिजर्व किया है ना, एक बिट को रिजर्व करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो मास्क है, डिफॉल्ट मास्क है, उसमें एक बिट को क्या कर दो, 0 से 1 में कन्वर्ट कर दो और उसकी वैल्यू लिख दो, तो क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा ना लास्ट ऑक्टेट में। तो यहाँ पे 128, और इसमें भी क्या है, एक बिट रिजर्व कर रखी है। एक बिट फिक्स करने का मतलब क्या हो गया कि मास्क में एक एक जीरो को क्या कर दो, 1 बना दो, तो एक जीरो को 1 बना दिया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये वाला मास्क। तो सबनेट S1 के लिए ये वाला मास्क हो जाएगा, सबनेट S2 के लिए भी क्या आ जाएगा, सेम मास्क, राइट? तो जब दोनों का मास्क क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ये जो मास्किंग की गई है, ये मास्किंग क्या है, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग, राइट? सो वेन एवर वी आर डूइंग द पार्टीशन इन पावर ऑफ 2, 2 की पावर में जब भी पार्टीशन बनेंगे तो क्या होगी, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। तो यहाँ पे 2 की पावर में पार्टीशन है ना, 2 पावर 1, दैट इज इक्वल टू 2, 2 पार्टीशन हो रखे हैं, है ना? इसका मतलब ये क्या है, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। नाउ टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? Clear? Okay, fine. Now you can take the screenshot.
Okay, so now let's see the next thing. Now tell me how to handle this situation that subnet ID and network ID they both are same, right? Here subnet ID is this one, and also the network ID for this one, that is 210.1.2.0. This is the network ID, right? Because this is the network ID. So subnetwork ID and network ID they both are same, and DBA for S2, direct broadcast address for S2, and direct broadcast address for network, they both are same, right? They both are same. Then how to handle this situation, right? So earlier that अर्लियर जो राउटर्स थे वो क्या नहीं कर पा रहे थे, इस सिचुएशन को हैंडल नहीं करते थे। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ता था, ये दो एड्रेसेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था, राइट? ये वाला और ये वाला, ये दो एड्रेसेस हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ते थे सबनेट मास्क में से, उसमें से सब नेटवर्क्स में से, राइट? बट नाउ दिस कैन बी हैंडल्ड बाय द राउटर। राउटर अब क्या कर सकता है, इस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, right? There is no problem in this situation. How to handle this situation, let me tell you. So assume that here this is what a router, here this is what a subnetwork S1, this is what a subnetwork S2, okay, and here this is the external one. So now what will happen, network ID subnetwork and this is the entire network. So network ID for this network is what, it is 210.1.2.0, 210.1.2.0, and subnet ID for this network is what, it is 210.1.2.0, 210.1.2.0, right? And what about next one, for this subnet S2, what is the network ID? Network ID for the S2 is this one, it is 210.1.2.128, right? So this is the network ID. Now if someone that is sending message from here, right, और मैसेज सेंड करेगा तो किसको सेंड करेगा, तो इनिशियली क्या करेगा, इट विल सेंड टू द एंटायर नेटवर्क, राइट? इनिशियली एंटायर नेटवर्क को सेंड करेगा, बिकॉज इसको नहीं पता कि इंटरनली क्या हो रखे हैं, इसके दो पार्टीशंस हो रखे हैं, राइट? इंटरनली क्या हो रखे हैं, इसके दो पार्टीशंस हो रखे हैं, इसको नहीं पता है। तो ये क्या करेगा, इसको ट्रांसमिट करेगा, तो इस नेटवर्क पे जाएगा। अब फर्दर इस नेटवर्क पे ये राउटर क्या करेगा, इस सिचुएशन को हैंडल करेगा, राइट? तो ये राउटर क्या करेगा, इस सिचुएशन को हैंडल करेगा कि इसको इस वाले सब नेटवर्क पे भेजना है या इस वाले सब नेटवर्क पे भेजना है, राइट? तो ये जो नेटवर्क आईडी से रिलेटेड सिचुएशन थी, इसको क्या किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। ऐसे ही डीबीए, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, देखो एक एलबीए होता है और दूसरा क्या होता है, डीबीए होता है। तो एलबीए का काम क्या होता है, एलबीए का मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग विद इन नेटवर्क, विद इन नेटवर्क, राइट? और डीबीए क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग बिटवीन नेटवर्क, राइट? ब्रॉडकास्टिंग बिटवीन नेटवर्क मीन्स ब्रॉडकास्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स, राइट? विद इन नेटवर्क का मतलब नेट ब्रॉडकास्टिंग विद इन सेम नेटवर्क, एंड बिटवीन का मतलब क्या हुआ, ब्रॉडकास्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। सो इज इट क्लियर और नॉट? LBA and DBA, they both terms are clear or not?
Yes, what about others? Okay, okay, fine. Now uh, let me left this situation here, because this situation sorry, these things can be handled by the router, right? These things can be handled by the router. I will tell you this story in the next example, right? Because it will make hodgepodge if I am telling this story also in same example, right? It will make hodgepodge. So let's see the next thing, that I want to do the four partitions. So firstly we'll learn how to do the four partition, after that we'll learn about this one. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही कर लेते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, राइट? तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। इज इट क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। आई एम गोइंग टू रब दिस वन। टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली। आई एम गोइंग टू रब दिस वन। ओके, so here this is the network ID given, or we can say this is the large network given, and I want to divide this large network into four sub networks. I want to divide this one into four sub networks. Then how many bits are required to do four partitions? Tell me, how many bits are required for doing four partitions? Two bits are required for the four partitions. So here it is 0 0 0 0, 4 times 0, 5 6 7 8, right? So here I want to do the four partitions. Four partitions that can be done with the help of two bits, right? So in the host portion we will reserve or we will fix two bits. So this is what the host portion, right? So in the host portion we'll reserved or fix two bits, right? So here it will be 0 0 0, or here it can be 0 1, here it can be 1 0, and here it can be 1 1. Okay, two bit we have fixed. Let me say subnet S1, here it is S2, S3 and S4. These are the four subnetworks. Now we need to find out the range of each subnetwork. Let's see. So here two bits are fixed, then how many places are remaining for the host portion? 1 2 3 4 5 6, 6 places. So here it is 1 2 3 4 5 and 6. At 6 places I will put 0 for the minimum number, right? Then what will be the value of this one? 0, right? And for the maximum number, again here it is 0 0, and 6 places 2 3 4 5 6, 6 places I will put 1 2 3 4 5 6, right? 6 times 1. So here this is what the 128, and this is 64. After 64 all ones means 63. So value for this one is 63. Okay, so is it clear?
Okay, fine. So this is the range of subnet S1. Now let's see the next one. Next one is this one. So here 6 places are remaining, 1 2 3 4 5 and 6. 6 places remaining. At 6 places I will put all zeros for the minimum number. So here it is 3 4 5 and 6. 6 times 0. So this one is 128. Here it is 64. So value for this one is 64. What about the maximum value of this one? So here we can say, here it is 101. After that 6 times ones, 1 2 3 4 5 and 6. 6 times 1. So what is the value of this one? So value for this one is 127, because this is the 128. After that all are ones, means it is 127. So value for this one is 64 to 127, right? So this is the range of subnet S2, right? So is it clear? Subnet S2 is clear? Clear. Okay, fine. Now let's see the next thing. Next is subnet S3. So let's find out the range for subnet S3. So here it is S1, 6 places are remaining, 1 2 3 4 5 6. 6 places are there. I will put zeros for the minimum number, right? If we put 0 here, what is the number here? It is 128, right? And what is the maximum number? Here it is 10. After 10, 6 places are there. It is 3 4 5 6. 6 places. I will put all ones. It is 3 4 5 6. Okay, so it is 1. Now what will be the value of this one? Here it is 128, and after that this is what, 64, right? After 64 all are 1, right? So here it is 63. So we'll add 128 plus 63. So 128 plus 63, this one is 1, and here it is 6 to 8 9, 191. So value for this one is 191. So range of subnet S3 is 128 to 191. Is it clear to all? Okay, fine. Now let's see the next one. Next, find out the range for this one. So here 1 2 3 4 5 6. 6 places are there. I will put all zeros for the minimum number, right? So here it is 128 plus 64. 128 plus 64 is 192. And what about the maximum number? Here it is 11. 11. After that 1 2 3 4 5 6. 6 places. I will put all ones. It is 1 1 1 3 4 time, 5 time, 6 time. 6 time 1, right? So what will be the value of this one? Here it is 255. So value for this one is 255, right? And this is what the range of the class C.
sorry, this is the range of the class, not a class, this is the range for the subnet S4, right? This is the range for the subnet S4. Is it clear? Clear. Okay, fine. Now let's understand the story of S1, this one, right? So here for S1 200 sorry 210.1.2.0, right? This is what the SID for S1, also it is the network ID. ठीक है, तो ये SID होगी और दूसरा network ID. What about next one? Here it is 0 sorry 1, after that 210.1.2. okay, this is what the first host, this is the first host. After that till this part same, here it is 2, this is the second host, and so on. In the last it is 210, just a minute, 210.1.2.1.2.63, okay, 63. This is what the direct broadcast address for subnet S1, and before this one it is 62, and this is what the last host. Now tell me, is it clear to all? This is the story of S1. Okay, fine. Now let's see the subnet S2. For S2 it is 210.1.2.64. This is what SID, subnet ID for S2, subnet ID for S2. Next is 210.1.2.65. This is the first host for S2, and next is 210.1.2.66. This is the second host for S2, and so on. 210.1.2. Last is 127. This is what the direct broadcast address for S2 के लिए, right? What about this one? 210.1.2.126. This is the last host. This one is last host. Okay, so finally this is what the story of the subnet S2. Is it clear to all? So you can take the screenshot. Now let's see next one, that is S3. For S3, here it is 210
dot 1 dot 2 dot 128. 128, this is what the subnet id for S3, right? Subnet id for S3. Next address is 210 dot 1 dot 2 dot 129, this is the first host. Okay, and so on. 210 dot 1 dot 2 dot, last one is 191. 191, this is the dba for S3, dba for S3, and before this one it is 190. 190, this is the last host. This is what? Last host. Okay, so is it clear till this part? Okay, now let's see the next one. Next one is this one, that subnet S4. S4, so here it is 210.1.2.0. okay, so here it is 210.1.2.0, and this is what, not a 0, it is 192, right? This is the SID for S4. Next, 210.1.2.193, this is what the first host, and so on. Next is 210.1.2.193, instead of 193 we write down here it is 255, last one is 255. okay, so 255, this is what, this is the last okay, DBA, this is what, DBA, direct broadcast address, DBA for S4. DBA for S4, also it is the DBA for network, DBA for network. Okay, so this is the DBA for S4 and DBA for network. DBA for network. Just a minute. Okay, tell me the subnet mask for that S1, S2, S3 and S4. What will be the subnet mask? Okay, it is 192. Okay, okay, let's see. So before this one 254, that will be the last host. Okay, almost correct. So last host, right? So this is what the story of S4. Now if we talk about the subnet mask, then
default mask is, for this one default mask is 255.255.255.0. so 0 we can write down, it is 2 3 4 2 5 6 7 8, 8 times, right? So in the subnet mask, here if we look, we have fixed 2 bit, right? it means in subnet mask will convert 2 bits into ones. तो ये दो जीरोस को क्या कर दिया, वन में कन्वर्ट कर दिया, राइट? जब इन दोनों को वन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 255.255.1100000, right? And what is the value for this one? It is 128 plus 64, 192, right? So subnet mask for S1 is 255.255.255.192, right? So here 2 bit are fixed, so it is 2 bit, right? It means 192. Here also 2 bit, here also 2 bit, as okay, and here also 2 bit. It means the subnet mask will be same for all these four subnet. S1 के लिए भी यही रहेगा, S2 के लिए भी सेम यही रहेगा, S3 का मास्क भी यही रहेगा और S4 का मास्क भी ये रहेगा, राइट? तो सबका मास्क सेम है, इसका मतलब ये क्या है, इट इज द फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग. फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग मीन्स व्हेनेवर वी डू द पार्टीशन इन पावर ऑफ 2. तो ये पावर ऑफ 2 है ना, 2 पावर 2, दैट इज 4 पार्टीशंस यहाँ पे हैं, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स that this is the fixed length subnet masking. Now tell me, is it clear or not?